Now from Beijing is Victor Gao. He's chair professor at the Soochow University in Suzhou, and he was also interpreter for Chinese leader Deng Xiaoping and has a deep understanding of the Communist Party. Victor Gao, welcome. The Chinese Foreign Ministry has said Indian forces, quote, provoked and attacked Chinese personnel in the Galwan Valley in Ladakh, where this violent incident happened. So this is all India's fault, is it? Well, first of all, it is very unfortunate for China and India to have this confrontation along the very long, very arduous border. Secondly, the fact that deaths occurred on both sides is extremely unfortunate. And third point is that fortunately no guns have been fired between the troops of the two countries. And from the Chinese perspective, of top priority is to calm down and to de-escalate. And neither China nor India want to have a war between the two largest populations in the world. A war will be detrimental to both countries. And I think the top priority is to negotiate a peaceful settlement of the border conflict between the two countries. There's lots to unpack here, but you said, you talked about deaths on both sides. China hasn't confirmed any reports of deaths on its side. What do you know? Well, the fact that this did not involve any gunshots between the troops of the two countries is very significant. And I understand ever since the end of the Indian-China border clash in 1962, no gunfires had happened along the long border. And this time was no exception. This means that the two countries have been maximum restrained, even when they come to blows with each other. And when you talk about bodily conflicts involving able-bodied soldiers, it is highly unusual that you will have injuries or even deaths on one side with nothing happening on the other side. However, so there have been deaths on the Chinese side. Has not published. Well, I think the media reports indicate there have been deaths on both sides, but there has been no government official report on the Chinese side. But I would say any death on either side or on both sides is very, very unfortunate. And I personally would mourn the death of any soldier or officer killed in the brawl. Right. And I hope neither side will happen with this bodily injury against each other again. Victor Gao, you spoke of a long and arduous border, but it's also a disputed border. Why then did Chinese troops enter the Galwan Valley, where this particular clash occurred, unilaterally in early May? Well, you may know, before the British occupied the Indian subcontinent, India was a cluster of different states. And when the British Indian Empire was at the peak, it kept encroaching into China's Tibetan region. And this actually caused a lot of border disputes after the British left, especially because the British carved out this so-called Mackay-Hong line, which successive Chinese governments have never recognized. And as of today, it is true that there are border disputes between China and India wanted to use the British line of demarcation between China and India, and China throughout the ages or through several successive Chinese governments have never recognized the legality of the Mackay-Hong line. So I think it's up to China and India to use all their wisdom and foresight to come to a settlement of their land disputes between the two countries. But that settlement hasn't been arrived at, is what I'm saying, Victor Gao. And therefore, it is a matter for bilateral discussion, something that you alluded to in your first answer. Therefore, my question is, why did Chinese troops unilaterally enter an area where they were last in 1962? No, I don't think what you mentioned is accurate on the situation on the ground. China has been maintaining its part of the deal with the Indian side, and China from the very beginning has been urging no conflict, no bodily injury would happen, and China has been calling for maximum restraint. And the fact that China and India have never fired a single shot
against each other ever since the end of the China-Indian border war in 1962. That is incorrect. There were shots fired in 1967 and 1975. But aside from that, you keep talking about no shots being fired. That is because of confidence-building measures, CBMs, that exist between the Chinese army and the Indian army. And they lay out quite clearly that no firearms are to be used in these engagements. That is the reason why no shots have been fired, is it not? Yes, indeed. That actually means that both China and India can exercise maximum restraint in situations like this. And I hope this will continue to be the case. And both sides need to de-escalate and avoid further building up the tension. You speak about de-escalation. There is a lot of anger and shock in India. What is the message from China to India today? Well, I think the message is undoubtedly a message of peace, because both China and India want to develop. Both countries want to really avoid any kind of mid-income trap which have befallen on many emerging markets in the world in recent decades. And China and India, being the two largest populations in the world, can only get along with each other rather than fall into a trap of traditional hostility, eventually even engulfing themselves with the great tragedy of war. For example, China and India had a war. It was very bitter, and it did not leave a very good legacy for quite a few decades. Speaking of that legacy, any flaring up of conflict will be bad for the two nations. Speaking of that legacy and this deadliest clash in more than 40 years, do you think China-India ties can actually recover? Absolutely. I'm very, very confident about the future of relations between China and India. Why? Because these two are the largest populations in the world. China with 1.4 billion, India with 1.3 billion. For these two countries not to get along and to engage in war against each other will be calamities for both China and India, as well as for world peace. Therefore, anyone with decency of mind will need to promote peace and stability and harmony between China and India. There is no other way for these two great countries to move forward. Victor Gao, always a pleasure talking to you. Thank you so much for joining us. Thank you. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं आवाज़ हिंद न्यूज एंड एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आपने वीडियो देखा कि किस तरह चाइना के जो विक्टर गाओ हैं, विक्टर गाओ ये एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत ही नज़दीकी ताल्लुकात है इनके। इनका जो सोच है आपको इस वीडियो से समझ में आ गया रहेगा कि ये क्या है जो आज के डेट में लद्दाख का जो क्लासेस चालू है, इसके पीछे की उनकी चाइना की सोच क्या है। आज तक हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर चाइना कर क्यों रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। खाली बॉर्डर पे फेस ऑफ हो रहा है, लेकिन चाइना की दिल की बात सामने नहीं आ रही थी, लेकिन आज आ गई है। और एक फॉरेन मीडिया के थ्रू उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया और इनकी जो दिल की ख्वाहिश जो थी आज आखिरकार वापस आ ही गई। और इसके लिए बहुत सालों से, अब सोच लो आज तक इसमें बोल क्या रहे हो, जैसे एकदम पॉइंट पे सवाल उन्होंने एंकर ने किया है कि चाइनीज़ आर्मी क्यों गई लद्दाख के एरिया में, जबकि उसके पहले बहुत शांति थी दोनों तरफ से भी। तो चाइनीज़ आर्मी मतलब क्यों गई, क्या रीज़न था, तो उसको टालते हुए टाल गए हो। और उसने जवाब क्या दिया इसमें कि भारत और चीन का जो सीमा विवाद है ब्रिटिश काल से रहा है। ब्रिटिश ने चाइना के ऊपर इन्वेड किया था, ऑक्यूपाई चाइना के एरिया को ऑक्यूपाई किया था, और जो कि उस टाइम पे नहीं सुलझ पाया था। तो अभी हम भारत से उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने एंकर ने फिर उसमें क्या किया है, उसको उसी सवाल को वापस खींचते हुए कहा कि आपका अगर ब्रिटिश टाइम से भी रहा है अगर सीमा विवाद, तो क्या उसका ये तरीका है कि आप डायरेक्टली जो है फोर्स को भेज दें और जहाँ पे, जबकि वहाँ पे जो है फायरिंग या फिर कुछ जो एग्रीमेंट है इंडिया और चाइना के बीच
कि फायरिंग नहीं होगी या फिर इस टाइप की कोई भी हथियार यूज़ नहीं किए जाएंगे, तो आप डायरेक्टली उस एग्रीमेंट को तोड़ के भी और आगे उससे भी बढ़ के आप वहाँ पे इतने सारे फोर्स डिप्लॉय करके और डायरेक्टली आप उस एरिया को वापस कब्जा कर लें। ये आपका तरीका है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या फिर जो भी बॉर्डर का इशू है उसको सॉल्व करने का। तो उसके पास कुछ जवाब नहीं था, वो स्पीचलेस था। लेकिन दोस्तों, इतनी बात तो समझ में आ गई कि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो खुल के सामने आया है और कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया को कोरोना वायरस देने के बाद चाइना सोच रहा है कि अभी इसका फ़ायदा उठाया जाए। पूरी दुनिया इसके गम में, इसके चोट से जो है इकोनॉमिकली भी कमज़ोर है। और अब ये समय है कि जहाँ जहाँ पे उनका जो भी उल्लू सीधा हो सकता है अटैक करें, किसी भी साम दम दंड भेद से उसको हासिल करें। तो लेकिन उनको शायद ये चीज़ पता नहीं है कि भारत में अभी ये चीज़ करके उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। शायद उनका पूरा प्लान फेल ना हो जाए। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों, हमको एक बहुत ही बड़ी चीज़ ये भी है कि हमको समझना पड़ेगा कि अगर आज के डेट में चाइना ऐसा बोल रहा है कि हमारी बॉर्डर इश्यूज़ सॉल्व नहीं है ब्रिटिश टाइम से, तो क्या 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, क्या हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे थे? आज तक क्या कर रहे थे? आज तक वहाँ पे एग्जैक्ट या परफेक्ट कोई बॉर्डर का या एक लाइन क्यों नहीं किया गया? लाइन इन द सेंस एक फाइनल बॉर्डर का एक डिसीजन क्यों नहीं लिया गया दोनों में बैठ के? 1947 से बैठ के आज तक अभी चाइना अगर आज ये शब्द निकाल रहा है कि हमारा बॉर्डर इशू ब्रिटिश काल से रहा है, तो सोचिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रही होगी ये कि आज तक इन्होंने सॉल्व नहीं किया है। और जबकि हमें अभी कुछ दिन पहले सुनने को आया था कि इंडिया की कांग्रेस पार्टी और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इनके बीच एक पर्सनल लेवल पे भी एग्रीमेंट है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पॉलिटिशियंस, हम समझ सकते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस वोट लेते हैं हमारे पूरे देश से, और एग्रीमेंट जो है फॉरेन अफेयर्स में खास करके ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें कि आप पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअली एग्रीमेंट करते हो कि एक दूसरे को फ़ायदा दे के हम कैसे, आप हमारे लिए सपोर्ट करो इंडिया में और हम आपके लिए सपोर्ट करेंगे चाइना में, हम आपके लिए बोलेंगे आप हमारे लिए बोलिए। तो ये मुझे ठीक नहीं लगी। आपको कैसा लगा? ये सब चीज़ें बहुत कुछ है। और चाइना को मैं एक्सपोज करने के लिए, चाइना बहुत ही शी जिनपिंग की बेटी के लिए ऊपर एक बहुत बड़ा वो न्यूज़ में आपको बहुत ही बड़ा जो है उसका जासूसी पकड़ा गया है। तो उसका मैं खुलासा करूँगा। बस कुछ फैक्ट्स जो है प्रूफ में कलेक्ट करने के चक्कर में हूँ। जैसे ही आ जाता है मैं पूरा कंप्लीट करके वीडियो बना के आप अपलोड करूँगा। आप तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने नहीं किया अभी कर लें। चैनल को लाइक करें, वीडियो अगर अच्छा लगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने वीडियो के बारे में क्या है आपकी राय, आप कमेंट नीचे में लिख सकते हैं। मुझे आप फेसबुक ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका डाल देता हूँ आईडी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।